जी अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर नोमान हेयर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिंबल से मुतालिक। जो बिगनर्स होते हैं, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिशियन का काम या इलेक्ट्रिकल का काम मार्केट में कर रहे होते हैं, उनको ड्राइंग पढ़ने में बहुत इशू आता है। तो या अगर गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर बहुत इशू आता है वर्किंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर तमाम काम ड्राइंग के मुताबिक होता है। मेरा जो फर्स्ट सिंबल है वो है स्विच बोर्ड से मुतलिक। स्विच बोर्ड बेसिकली हमारे रूम में इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें हमारे पास स्विच सॉकेट और फैन रेगुलेटर लगा होता है। नेक्स्ट इज़ टेलीफोन पॉइंट। टेलीफोन पॉइंट इज़ यूज फॉर टेलीफोन कनेक्शन। नेक्स्ट इज़ सीलिंग लाइट। सीलिंग लाइट यूज फॉर लाइटनिंग पर्पस इन योर रूम। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट सिंबल है वो है लाइट प्लग। इसको बेसिकली रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रिक आयरन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल इज़ पावर प्लग पॉइंट। पावर प्लग इज़ बेसिकली यूज फॉर एयर कंडीशनिंग एंड मोटर सप्लाई। नेक्स्ट इज़ सीलिंग फैन। दिस इज़ यूज फॉर एयर पर्पस। नेक्स्ट इज़ wall light used for lighting purpose. Next is call bell used for calling. Next is exhaust fan used for air ventilation. Bracket fan used for air purpose. Next symbol is aerial. It is used for telecommunication purpose. Socket outlet of telecommunication for telecommunication connection. Two-way switch for the staircase circuits or one light to different place. Next symbol is one-way switch used for lightning control, fan control and socket control. And next symbol is earth point used for the leakage purpose. And next symbol is horn hooter used for the voice purpose, for example in Moscow and marriage system. Next symbol is heat fixture ceiling used for the light purpose for a furnace. And next symbol is bulk heat fixture on wall for a globe light or wall light. Next symbol is distribution board. It is also called a distribution panel. In a panel install a circuit breaker. This circuit breaker protection your home. Next symbol is energy meter. Energy meter used for the reading your home appliances in kilowatt hours. Next symbol is fan regulator. Fan regulator is basically used for the speed high and low your fan. And next symbol is the most important symbol, fuse. Fuse used for the room protection for the short circuit. Next symbol is wire. Wire is used for the connecting your home appliances. Wire connection, basically wire connection is used for two wires are connected together one point. Wire crossing, basically wire crossing symbol is used for wire cross for one wire to other wire. Neutral link use for a bus bar system. न्यूट्रल वायर बेसिकली इसके अंदर कनेक्ट की जाती है। बैटन होल्डर बेसिकली आपका एक आर्म होल्डर होता है, जिसमें हम लाइट को कनेक्ट करते हैं। 2 पिन सॉकेट फॉर द कनेक्ट द लोड, फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई चार्जर, आप इसमें कोई लाइट वगैरह लगा सकते हैं। 3 पिन सॉकेट, इसमें भी बेसिकली आप कोई भी होम अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई, बेसिकली डीसी पावर सप्लाई जो होती है वो बेसिकली हम जैसे बैटरी या सेल या सोलर के ज़रिए हासिल करते हैं, तो उसका सिंबल ये बनाया जाता है। नेक्स्ट सिंबल इज़ एसी सप्लाई। एसी पावर सप्लाईज
from generator grid and WAPDA. Bracket holder, it is used for light. Single pole switch. Single pole switch basically work as a close and open circuit for your home load. Next symbol is double pole switch used for phase and neutral to control your home appliances, for example motor. Push button switch used for bell purpose. KitKat fuse for the protection of short circuit. Your load main switch used for home load on and off. And last is battery. Like and share.